वेलकम टू द चैनल। तो आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 2 दैट इज फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड इस चैप्टर का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे होंगे और पिछले लेक्चर में हमने इसका पार्ट 1 डिस्कस करा था। आई होप यू हैव सीन इट। और आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ डोमेस्टिकेशन तक कवर किया था एंड इन दिस लेक्चर कंटिन्यू here onwards. Okay, a new way of life. So if you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. Okay, तो आप जब कोई भी सीड्स लगाते हो, कोई भी पेड़ लगाते हो या फिर इफ यू डू फार्मिंग, तो इट टेक्स सम टाइम ना उसको ग्रो करने में। वो जो भी लगा रहे हैं उसको राइप करने में थोड़ा टाइम लगता है। सो टिल देन वी हैव टू टेक केयर ऑफ द प्लांट्स ऑफ द क्रॉप्स, राइट? वी हैव टू वाटर इट, वी हैव टू वीड इट। और अगर कोई एनिमल उसको खाने आ रहा है तो वी हैव टू मतलब उसको भी भगाना होता है, राइट? अदरवाइज एनिमल्स विल ईट इट अप, राइट? तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है, यानी कि हमें वहां रहकर खेती करना होता है। कुछ ग्रो कर रहे हैं तो वी हैव टू टेक केयर, वी हैव टू स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि प्लांट्स तो चलेंगे नहीं। तो वी हैव टू स्टॉप आवरसेल्फ, वी हैव टू बी एट वन प्लेस। तो इस तरह से क्या हुआ कि लोगों को एक जगह रहना मतलब एक तरह की सेटल्ड लाइफ शुरू हुआ। दे स्टार्टेड लिविंग एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एंड जब ग्रेन्स जो राइप हो जाती थी, जब पक जाती थी या फिर जब दे ग्रो इनफ टू ईट, उसके बाद दे हैव टू बी स्टोर्ड केयरफुली, राइट? स्टोर्ड केयरफुली, और उसको खाना है तो उसको भी प्रॉपरली केयरफुली उसको एज अ सीड वी हैव टू कीप, एज अ फूड वी हैव टू ईट, राइट? और कुछ को हम लोग फ्यूचर के लिए स्टोर भी करते हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स वी डू। ओके, तो इस सब के लिए क्या करना होगा? वी हैव टू स्टे एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बी इट 3 months, 4 months, or maybe 6 months, or maybe a year. Okay, so this was a new way of life. Earlier, people were traveling, or hamisha they used to move from one place to another in search of food, but now they have to stay at one place. Now, as grain had to be stored for both food and seed, मतलब grains जो ripe हो रही है उनको खाना भी है, and we have to keep it as seed also. Otherwise, seed नहीं रखा तो फिर next year कैसे उगाएंगे, right? So people had to think of ways of storing it. तो अब we are keeping something, right? तो उसको प्रोटेक्टेड तरीके से रखना होगा, अदरवाइज मतलब खराब हो जाएगा ना। अभी आप ऐसे खुले में यू विल कीप ग्रेन्स, देन या तो वो सड़ जाएगा या फिर कोई एनिमल्स उसको खा जाएगा या फिर कुछ भी हो जाएगा। सो वी हैव टू कीप इट सेफ. So in many areas, they began making large clay pots. So pots they started making for what? For storing grains, for future use, and second to protect the seeds so that next year वो उसको plant कर सके. और they started using वो baskets. Baskets look like this. Well, I'll show you the images. This is how it looks like. Okay, it's made up of baskets. Next, do you think hunter gatherers would have made and used pots? Give reasons for your answer. So obviously उन्हें जरूरत थी ना, उनको जरूरत थी, they needed something जिसमें कि वो चीजों को store कर सके. So obviously they would have been the one who would have made and used it. Like जब हमें need होती है then only we invent ना something. और इस तरह से they started making clay pots और वो baskets, and also they dug pits. Pits means what? Underground खोद के बनाते हैं. Okay, earth में we make a hole in the earth and there they keep protected. The next topic is storing animals. So animals multiply naturally. मतलब क्या हुआ कि we don't have to plant a seed ना, they reproduce on their own. हमें उसमें कुछ effort नहीं डालना पड़ता. Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food, right? And meat whenever required. तो हम अगर एनिमल्स का थोड़ा सा ख्याल रखें इन द सेंस कि कोई वाइल्ड एनिमल्स उन्हें खा ना जाए, या फिर दे गेट प्रॉपर फूड, ये सब का ख्याल रखें, देन वी कैन गेट अ गुड अमाउंट ऑफ थिंग्स फ्रॉम एनिमल्स, एंड हमें उसके लिए ज़्यादा चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं होती फॉर एनिमल्स, राइट? सो एनिमल्स को स्टोर करना और डोमेस्टिकेट करना वॉज वेरी ईजी. In other words, animals that are reared can be used as store of food. Okay. Apart from food, what are the other things that could have been obtained from animals? What are animals used for today?
तो अपार्ट फ्रॉम एनिमल्स क्या क्या चीजें ऑब्टेन होती थी, लाइक एग, मीट, apart from food, what wool obtain hoti thi, and what else? So you also think of the reason, okay? I mean, you also think of the things which could have been obtained from animals. और traveling में बहुत इस्तेमाल होती थी, like horses and all, या फिर camels and all, right? उसको traveling में इस्तेमाल करते हैं, isn't it? And what are animals used for today? तो अभी हम animals का क्या use करते हैं? Like let's say dog. We keep dogs ना to guard our house, right? इस तरह से और भी animals हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं. And the most important thing about animals is what? उनको ज़्यादा ख्याल नहीं रखना पड़ता as compared to plants. उनको ऐसा पानी नहीं देना होता, खाना नहीं खिलाना होता. वो खुद खा लेंगे, वो खुद पानी पी लेंगे, and मतलब सब कुछ खुद करने के बाद भी they give us some benefit. Okay. So this was the most important point of domesticating animals. So next is what finding out about the first farmers and herders. First farmers and herders. So turn to map 2. Let's just close these tabs. What's wrong? Let's go to this map. So what does it say on this map? You will notice a number of blue squares. Each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and hunters. तो इस मैप में जो ये blue square से शो करा गया है ना, वहाँ पे archaeologists have found what? Some evidences कि वहाँ पे farming and herding वगैरह होती थी. So what are the places? The first is Burzahom, that is in Jammu Kashmir. Mehrgarh, Chirand, Koldihwa, Daujili, Hadding, Mahagara, and then what is this place? Hall Ui, Payampalli. So these are some of the places जहाँ से, and see, these all are Neolithic sites. मतलब 10,000 साल, like after 10,000 years in the BC, we find evidences of farming. These are found all over the subcontinent, right? हमने पूरे इंडिया पे देखा कि these were found not just at one place, they were found at so many different places. Some of the most important ones are in northwest, in present-day Kashmir, and east and south India. Just look at it. This is in Kashmir, Burzahom, and then some are in south, like these two places. And to find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animal bones. One of the most exciting finds includes remains of burned grain. मतलब जो भी site मिलता है archaeologist लोगों को, वहाँ पे एक बहुत ही exciting thing what they find is remains of burnt grains. मतलब कि जो भी grain वो उपजाते थे उसका burnt ashes मिलते हैं. So these may have been burnt accidentally or on purpose. मतलब या तो गलती से they would have been burnt या फिर जानबूझ के उन्होंने जलाया होगा. Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. They can also identify the bones of different animals. मतलब scientifically कुछ ऐसे methods हैं जिससे कि ये पता लगाया जा सकता है कि which crop it was, and अगर कुछ bones मिलते हैं तो इससे ये भी पता चल जाता है कि which animal का bone it is, right? So our science is quite advanced, right? Towards a settled life. अब we have seen ना कि उन लोगों ने फार्मिंग शुरू कर दी. अब फार्मिंग शुरू कर दी तो उन्हें एक जगह पे बहुत समय के लिए रहना पड़ेगा. तो अब जब एक समय पे लंबे समय के लिए रहना पड़े, एक जगह पे रहना पड़ेगा, देन क्या हो जाएगा? दे हैव टू मेक अ हाउस देयर, राइट? तो इस तरह से क्या होगा कि एक प्रॉपर विलेज टाइप का कुछ बनेगा, एस्टैब्लिश होगा, दो चार फैमिलीज एक साथ रहने लगेंगी, मतलब आसपास में. तो इस तरह से क्या एक सेटल्ड लाइफ शुरू हो जाता है. So archaeologists have found traces of huts or houses at some sites. तो कुछ Neolithic sites पे क्या है कि archaeologists लोगों को कुछ huts या फिर कुछ houses के कुछ traces मिले हैं, okay? कुछ evidences मिले हैं. For instance, in Burzahom in Kashmir, people built pit houses. Pit houses are what? जो ground को dig करके, मतलब we what?
मतलब जमीन को खोद करके जो घर बनाए जाते हैं, दैट इज व्हाट पिट हाउस. सो विच वर डग इनटू द ग्राउंड. ओके, इट वाज डग इनटू द ग्राउंड with steps leading to into them. Steps in the what सीढ़ियाँ बनाते थे. Okay. Now these may have provided shelter in cold weather. Obviously, Kashmir has got cold weather, so these pit houses provided them a shelter in cold weather. Archaeologists have also found cooking huts both inside and outside the hut. Cooking huts are what the fireplace where we cook. Okay, chulha kind. So which suggests that depending on whether people could cook either inside or outside, indoors or outdoors. But if it is very cold, they will cook inside the house, right? And if it's not, then they can just cook outside their house. Now, stone tools have been found from many sites as well. ऐसे बहुत सारे sites से stone tools मिले. पिछले lecture में भी आप discuss ना, stone was really important evidence which we get from different sites. मतलब एक बहुत ही common चीज था which every people used. Every people in the sense कि अलग अलग जगह पे भी मतलब लेकिन लोग stones का इस्तेमाल करते थे. And in fact they preferred to live near a place जहाँ पे कि stone easily available हो, right? So many of these are different from the earlier Paleolithic tools, and that is why they are now called Neolithic. Paleolithic tools में क्या थे? Stones तो थे, but they weren't sharp, मतलब they were blunt. और धीरे धीरे वो कुछ एडवांसमेंट हुई इन द स्टोन टूल्स, और उसके बाद उन्होंने शार्प स्टोन्स बनाने लगे जिससे कि they use it as weapon. मतलब मल्टीपर्पज यूज था स्टोन in the Neolithic age. So these include tools that were polished to give a fine cutting edge. So if it has a fine cutting edge, तो last lecture में हमने discuss किया था कि they used it for so many purpose, like for अगर कुछ animal का hide in the sense skin, so they used it as a cloth. तो उसको दो ऐसे hides को join करने के लिए भी they used stone, and then for cutting the trees barks, or for cutting some fruits और या फिर digging the earth, ये सब कामों के लिए they used stones. तो जब वो pointed और fine cutting edge होगा तो things will get easy ना, जब वो sharp होगा तो. Okay. And mortars and pestles are what I'll show you the image. These Oakley kind thing. I mean this is a small one, but they used to have a bigger one. अब छोटा बड़ा कुछ भी हो, बट दिस इज व्हाट ओखली काइंड थिंग. ओके, दिस इसका मतलब होता है ओखली. ओके, सो यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन. इवन टुडे वी यूज ना, ऑब्वियसली टुडे वी डोंट यूज, बट थोड़े दिन पहले तक वी यूज्ड इट. और इनफैक्ट अभी भी वी यूज फॉर छोटा सा ओखली, राइट, इन किचन. Although we don't use for grinding grains, but yeah, for some reasons we use la. So mortars and pestles are used for grinding grain even today, several thousands years later. Yeah, obviously it is used. In some villages it is used. At the same time, tools of Paleolithic types continue to be made and used. And remember, some tools were also made of bone. Okay. So अभी भी मतलब न्यूलिथिक एज में भी कुछ पेलियोलिथिक टाइप के टूल्स को यूज किया जाता था, बट even after that they have developed some very advanced tool. Advanced मतलब कि पेलियोलिथिक से ज़्यादा advanced. Okay, like see, these have pointing edges. Okay, so many kinds of earthen pots have also been found. Earthen pots are what जिसमें कि वो लोग स्टोर करते थे, मटका kind. Okay, these were sometimes decorated, मतलब कुछ pots को वो लोग decorate करके paint करके भी बनाते थे, and were used for storing things मतलब क्या, वो लोग सीड स्टोर करते थे, फूड ग्रेन स्टोर करते थे ताकि वो फ्यूचर में उसका इस्तेमाल कर सके, और सीड्स भी स्टोर करते थे. ओके, सो पीपल बिगिन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग, एंड जब उनके पास ग्रेन्स आने लगे, सो दे लर्न कुकिंग एज वेल. तो वो लोग उसी पॉट्स का इस्तेमाल फूड्स को कुक करने में भी करने लगे, स्पेशली लाइक ग्रेन्स लाइक राइस, wheat, lentils are what, दाल. ओके, एंड नाउ वो सारी चीजें, राइस मतलब दाल चावल, दिस हैज बिकम व्हाट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट, इजंट इट? अभी भी हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट इज दाल चावल. So besides they begin weaving cloth using different kinds of material, for example cotton that they could grow, that could be grown. मतलब धीरे धीरे they learned to grow cotton, और फिर उससे क्लोथ्स को वीव करने लगे, कपड़े बनाने लगे. तो अब धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब बहुत आगे बढ़ रहे हैं लोग in the past, in the Neolithic age. So
things change everywhere all at once. So this is what, let me just highlight this. In the very first or maybe second lecture we would have discussed, in fact first lecture में भी discuss किया था in the chapter 1 कि हमारे जो past है, so was it just one past or there were multiple past, right? So we what we have discussed कि हमारा एक past नहीं था, we had several different past. So ये सारे changes जो अभी हम पढ़े हैं वो एक ही साथ सारी जगहों पे नहीं हुआ, कुछ कुछ जगह ज्यादा एडवांस थी, कुछ जगह बैकवर्ड थी, right? So in many areas, men and women still continue to hunt and gather food. Like अभी भी अंडमान निकोबार people hunt and gather food, right? मतलब इतने साल बाद भी they do the same. मतलब क्या हुआ? And we don't do that, right? तो हमारा past और उन लोगों का past अलग अलग है, right? So we had multiple past. People adopted farming and herding slowly over several thousand years ago. तो ये shift जो है hunting gathering के farming का, ये all of a sudden अचानक से नहीं हो गया. It took thousands of years. बहुत slow करके they became farmers. Besides, in some cases, people tried to combine these activities, doing different things during different seasons. So what were the things? They were weaving clothes and they were farming. तो जब season होता था, then they used to grow crops. जब off season होता था, then they used to weave clothes or some other activities like maybe pot making or pot decorating or all those. There were so many activities they used to do, right? So ये सारे काम करते थे. Now the last thing is, I guess, a closer look, a living and dying in Mehrgarh. Mehrgarh is a place near where Bolan Pass, which is one of the most important routes to Iran. Let's just see it in map. Here we have Mehrgarh here. So okay, so Mehrgarh was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat. तो Mehrgarh was Neolithic site जहाँ से कि हमें barley and wheat के traces मिलते हैं और जिससे हम ये predict करते हैं कि वहाँ पे barley and wheat को grow किया जाता था and they used to rear sheep and goats for the first time in this area. मतलब उस area में इस जगह पे सबसे पहले barley and wheat को grow किया गया and they domesticated sheep and goats for the first time. Okay. It is one of the earliest villages. एक earliest village मतलब कि very मतलब बहुत पहले जो villages का culture शुरू हुआ, जब settled life शुरू हुआ, तो this was one of the very earliest villages जो कि setup हुआ, क्योंकि यहाँ पे farming पहले शुरू हुआ इसलिए यहाँ पे village पहले setup हुआ. Okay, so at this site many animal bones were found. Bones of wild animals such as the deer and pig and also the bones of sheep and goat were found. So these were the 4 animals जिसके bones वहाँ पे मिले in Mehrgarh. Other finds at Mehrgarh include remains of square or rectangular houses. ये house देख रहे हो ना? This is a square house, right? With 4 compartments. So this is how घरों के structures वहाँ पे मिले, मतलब इस तरह के घर के structures के evidences मिले वहाँ. Okay. So it had 4 or more compartments, some of which may have been used for storage. तो यहाँ पे 4 compartments है, कुछ घर में रहते होंगे, सोते होंगे, कुछ घर में खाना बनाते होंगे, कुछ घर में food grains को store करते होंगे. Okay. So when people die, their relatives and friends generally pay respect to them. Obviously, we also do, right? So people look after them perhaps in the belief that there is some form of life after death. तो हम लोग अभी भी इस बात पे विश्वास करते हैं, कुछ लोग विश्वास करते हैं कि there is a life after death. But उस समय जो मेहरगढ़ के लोग थे या फिर past में जो लोग थे, they strongly believed कि after death there is a life. So some burial is one such arrangement. Okay, it's a arrangement. Burial मतलब जब somebody passed away तो उनको जिस जगह पे दफनाया जा रहा है, that is what burial. So several burial sites has been found at मेहरगढ़. मतलब उस समय तक ना ऐसा हुआ था कि जब वो लोग settled life जी रहे थे तो they had a family. तो लोग के पास एक family थी. तो when somebody passed away, तो उन्हें proper तरीके से दफनाया जाता था. Unlike उससे पहले, जब बहुत समय पहले ऐसा settled life नहीं था तो लोग कहीं भी मर जाते थे, nobody cared. But now लोग एक proper procedure के साथ लोगों को दफनाया करते हैं. So in one instance, the dead person has been buried with goats. मतलब एक किसी burial site में ये पाया गया कि that dead person was buried with goats, which were probably meant to serve as food in the next world, because they believed कि
there is a life after death. तो जब when he will have life after this death, then उसके खाने के काम आएगा this goat. Okay. यहाँ पे कुछ images थे. You see this. Burial from Mehrgarh. So this looks like what? This is what a skeleton, right? So this is human का skeleton. This might be उसका goat का skeleton, right? तो उसके साथ इसको दफनाया गया. And a house in Mehrgarh. So this is what it looks like. तुमने images को भी discuss कर लिया. And this is a pot. Then next, elsewhere. मतलब कहीं पे, somewhere in the world. इससे पहले we were talking about India and now we are talking about France. Cave paintings in France. तो France में क्या मिला? Cave paintings. So let's just look at France in Atlas. France in Atlas. Yeah. Here we have France. Let's just look at how far France is from India. थोड़ा और zoom out करते हैं. And here we have India and here we have France. Okay. देखो फ्रांस के आसपास के कंट्रीज को देखते हैं. Okay. फ्रांस के आसपास बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, स्पेन. तो मतलब इस तरह से अगर हम एटलस को डिस्कस करेंगे तो धीरे धीरे यू विल अंडरस्टैंड व्हाट कि मतलब कौन सी कंट्रीज कहाँ है, किस कॉन्टिनेंट में है. तो धीरे धीरे आपको मैप भी याद हो जाएगा. So there we found France. Now this painting below is from a cave in France. This site was discovered by 4 children. School children ने ये painting को discover करा था. 4 school children ने. Okay. More than 100 years ago. Paintings like these were made between 20,000 to 10,000 years ago. Many of these were animals and such as wild horses. मतलब generally जो paintings मिलते थे वो animals के होते थे. और ये जो कलर्स है वो किस चीज से बनाए जाते थे? फ्रॉम आयरन ओर या फिर चारकोल. सो इट्स पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स. या मतलब यहाँ ये कहना जा रहा है कि सेरेमोनियल ओकेजन्स लाइक कुछ हमारे यहाँ कुछ पूजा होता है, राइट? तो हो सकता है कि वो अर्ली ह्यूमंस का कुछ ऐसा सेरेमनी होता था जिस दिन वो लोग ऐसा केव पेंटिंग्स बनाते थे, या फिर जब वो लोग हंट पे जाते थे तो तब ये बनाते थे, या फिर कभी हंट करके लाते थे तब बनाते थे. There could have been many reasons, or you can also think of so many reasons that why they did this. Okay. And there's another thing we will be discussing about somewhere on the earth, and that somewhere place is what? Somewhere place is Turkey. Let's just see it on this country to on map. Here we have Turkey, and it's very मतलब nearby to India. So here we have India and here we have Turkey. तो यहाँ पे क्या मिला? So one of the most famous Neolithic sites, Catalhuyuk, was found in Turkey. So this is a Neolithic site, Catalhuyuk. Several things were brought from great distances. तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिली which has been brought from far distances. Like what? Flint. Flint is a kind of stone. Okay. And it was brought from Syria. Then cauries from the Red Sea. Cauries, I'll show you the image. Cauries. This is how cauries look like. You would have seen it somewhere. And shells. This is how shells look like. So shells from the Mediterranean Sea. And used in the settlement. Remember, there were no carts. Obviously, उतने समय पहले there was wheel का invention या फिर discovery जो भी कहे, invention नहीं हुआ था. Okay, so most things would have been carried on the backs of animal. यानी कि they used animal to carry the things. हमने इसे पहले भी discuss करा था in the uses of animal. So last question what is asked is, what do you think cowries and shells used have been for? Okay, तो आपको क्या लगता है why they would have been used? मतलब कोई proper जरूरी का यूज तो नहीं लग रहा है. कौड़ी से क्या ही करते होंगे? ना तो खाने के काम आती है, ना तो रहने के काम आती है, किसी काम की नहीं है. But yeah, there was one use which could have been for these cowries and shells, since they were brought from great distances और बहुत they are not found easily, right? तो ये हो सकता है कि these were the valuable items. ये this might be a shine, this might be used as a currency, मतलब पैसे की तरह यूज करते होंगे to exchange for some item. मतलब इनका कुछ वैल्यू होगा, right? इस तरह से. या फिर क्या पता ये लोग ज्वेलरी की तरह इस्तेमाल करते होंगे. there would have been many things they would have, like बहुत सारे ऐसे reasons हो सकते हैं जिसके लिए कि वो ये सब को यूज करते होंगे. और you to think of the reason and write it down in your copy. Okay, so I have
So we have done the chapter, and अगर possible होगा तो after completing all the chapters I'll discuss the question answer as well. तो अभी के लिए chapter 2 is completed. Next lecture से chapter 3 शुरू करेंगे. Till then you have to read from like मैंने last class में कहा था कि यहाँ तक read करना है, और आज इसके आगे यहाँ से आगे read करना है इस topic से आगे. Okay. Thank you. Keep learning and take care. Bye bye.